Yeah, hello and welcome to the day 7th of coding, or I would say learning front end development part. So today is day 7 of learning. Like I would say the day 7 of live stream session क्योंकि ये सातवां दिन है live stream session का, and here am I back again with another live stream session of the front end part. So where जहाँ पे मैं where I will be learning the all the front end libraries or whatever requires to develop the front end developer skills from the scratch. So this is just another one here. I'm on the free code camp. I'm following that project, or I'm following the course of free code camp. So yeah, let's start with the, I think everything is on the plate. So let's start and dive into without any hurry, without any further ado. Yep. So I think because I also apart from the live stream session, I also self study the free code camp. So I think which could not be shown in the live stream because I have already done that. So why would I? So it's kind of like whatever. It's just a accountability thing that I have to do few 1 hours or 2 hours of live stream session. So I think it's not kind of a teaching session or something like that. Okay, so let's start. So here I'm back again with the basic JavaScript. You can see over there basic JavaScript, and that's the last. I think it's a program I have to build here. I don't know. I was hovering through the Khan Academy, and there I read the story on the by the developer. They said I think I was skimming through the JavaScript section. They have a very great one. So it said that you are learning the JavaScript. Why you are learning? It means if you are learning all the basic things, all you will learn also advanced things. Now you have learned all of these to what? So you could build we could build some programs with your ideas, so the end result is you have to build something, whatever you have learned, whatever you have gained through the your hours of effort on any skill, on any language. You have to build something by skimming your ideas, or maybe if you do not have an idea, just just see somewhere what you want to have, like copy one, but use your what you learned, so it could revise your mind what you are going through. So for the let's go through the last section. Is a use recursion to a countdown thing. It's a project. So I think recursion is a very confusing concept. I learned. I just went through some YouTube videos, and it was really great. I saw some videos and I understood a little bit, but I understood clearly to move ahead. So here I'll use the same whatever I learned over there to solve this one. So here I also make notes here, so I could revise, go through the again. I think I have made also the same for the recursion, and let me see what I have written over there. Yeah, where is the recursion note? Then I will go. Oh, wait a minute, wait a minute. Yes, here you go. So this is the recursion. Yeah, recursion is a process to call the function. It's like calling the function. Function name. The function name is here factorial. A recursion is just a process. Is just a few line of code that the code we say it a recursion process. So this is a recursion process code. See, return n into factorial n minus 1. This is the function name, no? Factorial n minus 1 is the name of the function. So, and it is besides the return. So when you like when the code or the program goes skimming over this, comes to this side, and it said return. Okay, what I have to return? Return function. You are okay. What function? The same function. So again it will return the same function. Then again it will start from here. So it will return infinite time until there is a specified condition. What is a specified condition? The specified condition is here. That is called a base method. Yup, a specified condition is a base method. So if n is equal to 1, then return 1. Here goes the ending. That's the end. Yup, I think let's go. And let me revise writing some of it here. So how do I start?
me just skim myself. What I learned through the videos. Let's say if I create a function here, this is a function here, okay, and let's say I say ki return. I would say print print what print. Let's say why don't you print? I have let's print my recursion. Okay, hey, so this will gonna print here. Now what am I doing again here? I am again calling the function here. This is what I'm talking about. So okay, I misprinted the mistype the name. You see that this is what I'm talking about. So see, function is schemes through this one function, it reads the print, and then it calls the function. And again, as the function calls, again it goes through this. So this print function is going to pile up. It's not going to print like my recursion. So this is the case, like it's a calling the function. Yeah, let's see how it is going to work here. Yeah, let's see. So there is already a function name countdown, and one parameter is given here n. So what is the use of parameter? I mean, you have to call the parameter like this one, countdown, if you have to. And the return, definitely return will be used here for the recursion here. Let's see, let's read that code here and see what is there. We have defined a function called countdown. ओके एक चीज़ बोल देता हूँ डैट डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी आ सकती है, बिकॉज हो सकता है ऑडियो माइक्रोफोन वैसा नहीं है, सो विच समझ रहे हो ना, बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, ज़रूर आएगा, बट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग और व्हाटएवर जो स्क्रीन पर है, आई थिंक दैट वुड बी इनफ. सो या लेट्स गो. So we have a defined function called countdown with one parameter in here, n is given here. Function should use recursion to return an array contain. So recursion like this, recursion process करना है, कोड ही चाहिए, कोई कोड के फॉर्म में recursion रहेगा. एक ऐसे कह सकते हैं, let me say to you, it's like, hey man, hey someone tells you, why don't you create a function? function क्यों नहीं बनाते हो? मुंह से बोल रहा फंक्शन कैसे बनाते हैं? अरे फंक्शन कोड से फंक्शन बनाना. You have, what do? You just get the function here. This is the process of making the function. The same goes with the recursion. Okay, why don't you use the recursion? Okay, how do you use the recursion? You have to write the code for the recursion. Recursion process contains the code that says this is the recursion happening. See, this is the code. What is recursion? Calling the function. What happens in the recursion process? The code is calling the function, so you have to write where code is calling the function itself. So you can vouch for sure that this code is going to happen the same countdown, because definitely it definitely looks like it is going to call the function. Okay, now let's go ahead, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है. The function should use recursion to return an array. Array जानते हो ना, list of items. Array बिग ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे विथ कॉमा, उसमें इंटीजर, एरे में बहुत सारे इंटीजर है, एक 2 3 4 सारे इंटीजर थ्रू वन एंड बेस्ड ऑन द n पैरामीटर. ओके, द फंक्शन इज कॉल्ड विथ अ नंबर लेस देन 1. ओके, लेस देन 1 से अगर कॉल किया गया फंक्शन, मतलब यहाँ पे एक और चीज़ डालता हूँ, फंक्शन कॉलिंग. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे डालना ज़रूरी है क्या, जैसे और फंक्शन कॉलिंग वाले से लेस देन 1 बोल रहा है, तो 0.6 अगर डालते हैं तो एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है. सो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, लेट्स सी, मूव अहेड. सो इट सेज दैट लेस देन 1 द फंक्शन शुड रिटर्न एन एम्प्टी एरे. यप, अगर कॉलिंग में 0.6 आए, इट्स लाइक अ बेस मेथड. वाओ, दैट इज सीधे अभी कुछ नहीं करते हैं. अगर लेस देन 1 से हुआ तो फंक्शन शुड रिटर्न एन एम्प्टी एरे. एम्प्टी मतलब कुछ नहीं कंसोल में आएगा, पूरा एम्प्टी.
For example, calling this function with n is equal to 5, so return the array 5 4 3 2 1. For example, calling the function n इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पे मैं अगर 5 डालता हूँ तो इट मीन्स मैं यहाँ 5 डालता हूँ तो जैसे यहाँ 5 डालूंगा यहाँ पे भी 5 चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एरे क्या रिटर्न करेगा 5 4 3 2 1, और अगर 6 किया तो 6 5 4 3 2 1, ऐसे डिक्रीज मैनर में। ओके ओके, 5 किया तो 4 3 2 1, ओके ऐसे चला जाएगा, ठीक है ठीक है। ये फंक्शन मस्ट यूज रिकर्जन बाय कॉलिंग इटसेल्फ, मस्ट नॉट यूज लूप्स ऑफ एनी काइंड। यस यस, इसमें हम लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक माइनस माइनस करके। लेट्स सी एक बार क्या देखें क्या लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। लूप फॉर लूप के लिए क्या करना पड़ेगा, आई थिंक फॉर का क्रिएट करते हैं। लेट्स सी फॉर, अगर ये क्रिएट करना है 5 4 3 2 1 तो इफ आई इज इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, 1 तक आई इज ग्रेटर देन 0 एंड आई शुड बी what I should be less than or equal to 5, then I minus minus, okay ये यार क्या हो गया माइनस माइनस, ये आई थिंक दे देगा ये 5 4 3 2 1। ओके वेट अ मिनट और यहाँ पे डालना पड़ेगा एक और चीज़, लेट आई का जो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 0, व्हाट इफ आई, अगर मैं इनिशियलाइज करूँ लेट आई इज इक्वल टू, इससे कहाँ से इनिशियलाइज करूँ 5 से स्टार्ट होगा ना, ओके सो 0 से स्टार्ट करते हैं। सो इफ आई डू आई इज ग्रेटर देन 0, लेट मी सी, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा ये क्या आता है। कोड में काफ़ी इस प्रैक्टिस थिंग, राइट 0 आई इज लेस देन 5 हेयर, और मुझे करना क्या है वही प्रिंट। सो for let I is equal to 0, I is less than 5 and minus, okay wait a minute। ओके देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। अरे यार कुछ तो नहीं यार, इधर तो क्या हो गया, टाइम आउट क्यों लिख रहा है, अरे यार अच्छा ये क्या, इसको हटाना पड़ेगा। 5 ओहो अनलिमिटेड क्यों आ रहा है, 0 आई इज लेस देन 5,
अरे इसका तो fuck is that? एक कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करो, डालो तो 0 -1। अरे यार, इफ आई इज इसका टू लेस देन 0। ओके, काम करते हैं। मिसिंग सेमी कॉलन, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये 0 आ गया। 5 4 3 2 1। मुझे अगर 0 नहीं चाहिए तो ये क्रिएट हो गया 5 4 3 2, लेकिन मुझे अब रिकर्जन का यूज़ करना है। सो लेट्स यूज दिस वन रिकर्जन हियर। ओके, काउंटडाउन तो यूज़ होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करना है इसमें? फॉर एग्जांपल इफ n इक्वल टू 5, द array will 5 4 3 फंक्शन मस्ट यूज रिकर्शन बाय कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, अगर n होता है 5, कॉल द 5, रिटर्न क्या करेगा? n माइनस वो मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज डेफिनेटली कि बेस को इसका बेस निर्किट करना पड़ेगा। इफ n is no less than, if n is equal to 1, return 1। अभी भी यही हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैक्सिमम कॉल स्टैक कैसे करेगा? if n is 1, यहाँ पे देखते क्या किया है। n minus 1, we learn how to use recursion to replace a for loop. Now let's look at a more complex function that returns an array
of consecutive integer like 1, 2, 3 starting with 1 through the number per function as mentioned in the previous challenges. There will be a base case. Yes, base meter इसको बोलते हैं. The base case tell the required function when it no longer needs to call itself. A simple case where return value is already known. Yeah, there will also be recursive call which execute the original function with different arguments. Yep, ये इसी को this is called a recursive call. यहाँ पे अलग अलग आर्गूमेंट जाएगा. कभी फर्स्ट एन इन से थोड़ा कम रहेगा तो एन माइनस वन ही जाएगा. या देखो देखो कैसे हो गया. एन माइनस वन जैसे ही डाला. इफ़ आई गिव देर 5 ईयर तो यहाँ पे अब 5 एफ एन इजकल टू नॉट वन रिटर्न हो तो ये भी ये सही नहीं है. जैसे कि 5 यहाँ से गया 5 इधर. एन 5 1 के बराबर बिल्कुल नहीं. सो ये एक्सक्लूड हो जाएगा कोड अब यहाँ. ओके. अरे यार तो इसमें वो होना चाहिए अनडू का ऑप्शन. सो अब कोड यहाँ 5 यहाँ पे आया. रिटर्न काउंट डाउन 5 माइनस वन 4 फिर 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 आया. तो नाउ काउंट डाउन 4 तो इस लाइक काउंट डाउन 4 ये फंक्शन का नाम है 4 फिर मतलब कॉल कर रहा है. इट्स लाइक अ कॉलिंग फंक्शन. काउंट डाउन पैरामीटर विथ 4 कॉल द फंक्शन. फिर कॉल करेगा 4 इज नॉट इक्वल टू 1 सो रिटर्न नहीं करेगा. फिर यहाँ पे आएगा काउंट डाउन 3 फिर 2 1 फिर लास्ट में से 1 आएगा रिटर्न 1 तो रिटर्न सर जैसे ही यहाँ की बिकॉज जैसे ही इसको एक्सक्लूड करता है तो एंड जैसे ही इस रिटर्न पे आता है तो देखता है रिटर्न करना क्या है. रिटर्न देखता है यहाँ पे रिटर्न करना है काउंट डाउन. कुछ वैल्यू ही नहीं है. लाइक इट्स अ फंक्शन का नाम है. ये तो फंक्शन है और उसके बीच में एक पैरामीटर है. इट्स अ रिटर्न करना है क्या फंक्शन को कॉल करने का रिटर्न करना है. इसी को रिटर्न करना है. इट्स नॉट कि कोई वैल्यू रिटर्न करना है. तो ये तो रिटर्न द इनवर्स में तो रिटर्न किया जैसे ही लास्ट में 1. नाउ मुझे वैल्यू स्टोर करना है. 5 भी रिटर्न हुआ 4 भी रिटर्न हुआ 3 भी रिटर्न हुआ बट मतलब 5 भी गया इस प्रोसेस से 4 भी गया बट वो वैल्यू स्टोर नहीं हुआ. उसी को अब स्टोर करना. लेट्स सी. लेट्स से इफ 5 गोज हाउ कैन आई मेक इट टू. यहीं पे करना पड़ेगा कुछ. व्हाट इज सेज is less than one return product and return an array empty array. अच्छा मुझे भी कुछ ऐसे बोल रहा है करने को. when you define function call with recursion and if the function is called with a number less than one तो कोई इक्वल टू नहीं लेस देन वन. इफ एन इज लेस देन वन रिटर्न क्या है एम्प्टी एरे. ये and then return empty. For example when the function 5 return now else अगर n से ज़्यादा है सो क्या रिटर्न करना चाहिए. और भी कुछ डालना पड़ेगा क्या. वन गया. वन शुड बी रीड. इन यहाँ पे 5 होगा 5 देन व्हाट यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए 5 एन 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 कॉमा. काउंट ऑफ एन माइनस वन. ओके ओके. काउंट एरे डॉट पुश एन. यहाँ पे 5 डाला 5 को ऐड कर देगा. ओके ओके ओके. सिंपली ये कर सकते हैं.
हाँ ये बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं सीधा इसको इनिशियलाइज करते 0 पर और करते हैं वाई डॉट पुश एन। ओके 0 पे क्यों एम्प्टी अरे कर सकते हैं क्या? सो वाई डॉट पुश एन क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? ओके ये हो गया। क्या है रिटर्न काउंट एरे। यहाँ पे काउंट एरे रिटर्न किया। काउंट एरे है क्या? काउंट अप n minus 1. Count up is a function name. This is n minus 1. ओके ओके ओके, तो इसको वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा कहीं पर, मे बी यहाँ पर। let y is equal to counter n minus 1 and y no 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 1 2 3 4 5। एक और होता है आई थिंक अनशिफ्ट होता है क्या? या 5 4 3 2 1। तो ये हो गया, इसी को आई थिंक रिकर्जन कहते हैं। आई थिंक आई नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस समझने के लिए थोड़ा सा। Value decreases but the values of are increasing. या पुश जो फंक्शन है वो नंबर लास्ट में भेज देता है। where n is pushed in the array count up into the array count up has already been evaluated and returned 1 2 n minus 1। फंक्शन करता क्या हुआ? आई मीन व्हाट इट डज, काउंट में गया और एस 5 यहाँ 5 इज नॉट लेट दिस 1, सो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू काउंट डाउन फंक्शन है, यहाँ पे फिर से कॉलिंग हो रहा है 5 minus 1 रेज काउंट डाउन 4 y इज अनशिफ्ट डॉट एन, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 and then return the y। Okay, so return big bracket let y is equal to count down n minus 1। so n minus 1 रीजन क्या होता है? बिकॉज अगर n करे तो एवरी टाइम n ही चला जाएगा, n 5 5 5 5 5, कभी 5 देन 4 देन 3 देन 2, ये स्टोर करना है, एक लूप क्रिएट करना है। तो इस लाइक ये कह सकते हो कि ये है एक तरह से आई माइनस माइनस का सीक्वेंशियल, और जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं वो उसका काम करता है। हमने वही क्रिएट किया है एक लूप का, वो कंडीशन काउंट डाउन इन माइनस 1। इट्स नॉट अ वैल्यू, वी हैव मेड इट अ वाई काउंट डाउन इन माइनस 1। what happens when we made to the equal count down in minus 1? Okay, let's see. Yo, it's done 7, let's see what's left. Basic JavaScript 99% is done here, and use recursion to create a range of numbers। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, let's solve it।
फंक्शन का नाम रेंज ऑफ नंबर्स, दो पैरामीटर्स है स्टार्ट नम और एंड नम, ओके। एंड यहाँ पे एक रिटर्न है एम्प्टी एरे, ओके। देखते हैं क्या करना है इसमें। क्रिएट अ रेंज ऑफ नंबर्स, रेंज मतलब रेंज इज लाइक 5 और 10 के बीच में जितने नंबर है उसको प्रिंट करो, 5 6 7 8 9 10। लास्ट में हमने एक n-1 का कुछ डाला था वैसे ही। सो लेट्स सी क्या है। कंटिन्यू फ्रॉम पेज, वी प्रोवाइड यू अनदर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। And so we have defined a function named range of numbers with two parameters here, ठीक है। The function should return an array of integers, okay, which begins with a number represented by the startum, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड एंड यहाँ पे होगा, ओके। कूल कूल कूल। And the starting number will always be less than or equal to the ending number, definitely. Your function must use recursion by calling itself, not use loose and account. It should also work for cases where both sides are the same. ओके, एक चीज़ तो कॉमन होने वाला है। वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन एयर लूप, इसलिए बिकॉज देर इज ए स्टार्ट, देर इज ए एंड। सो उसको प्रिंट करना है, तो 1 2 3 4 5, 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर है उसको प्रिंट करना है, जितने भी एरेज है उसको प्रिंट करना है। सो इट्स लाइक वी आर लाइक प्रिंट 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 सो मेनी कोड्स। तो इंस्टेड ऑफ लूप यूज नहीं करना है, रिकर्जन का यूज़ करना है कि वो हर एक नंबर रिटर्न करे पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नाउ। आई थिंक शुड स्टार्ट, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट नाउ रेंज नंबर, और लेट्स से वो स्टार्ट होगा, स्टार्ट नम से स्टार्ट होगा, स्टार्ट नम, देन वो आई थिंक प्लस होता जाएगा स्टार्ट। दो पैरामीटर कैसे डालना है, स्टार्ट नम से स्टार्ट +1। जैसे भी डेफिनेटली कुछ स्टोर करना पड़ेगा। लेट एक्स इज इक्वल टू सिंपली नेम, उसको रेंज ऑफ नंबर क्रिएट करना है। सिंपल एक नेम है रेंज ऑफ नंबर, ऐसा नहीं कि रेंज बताएगा, कुछ एक भी नाम हो सकता है, बट हमें वैसा क्रिएट करना है, वैसा प्रोग्राम जो जो स्टार्टिंग पॉइंट हो एंडिंग पॉइंट हो। स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या कर सकते हैं, जितने भी पढ़े हैं याद करो, क्या कर सकते हैं, +1 होगा, इंक्रीमेंट होना चाहिए। स्टार्ट नंबर कैसा होगा, क्या स्टार्ट नम +1। जैसे मैं 5 डालता हूँ और 10, रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 5 और 6। पर बेस में क्या करते हैं, इफ if end num wait a minute end अरे यार कुछ तो नंबर होना चाहिए। ओके, इफ एंड नम इज ग्रेटर देन 1, इफ एंड
num is a num is greater than 1. यहाँ बोल रहा है कि इफ इवन इफ दे आर इक्वल वो भी प्रिंट करना है, अगर इक्वल हो तो भी फिर वन इक्वल टू 1। ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। biggest number represented by the start number and ends with the number represented by end number. The starting number will always be less than or equal to the ending number. Okay, it says start num should be less than or equal to the end num. 10 भी हो सकता है, 5 and okay, so if end num is equal to return क्या रिटर्न करना, एम्प्टी अरे, okay, empty array, let's see. Okay, so x is a range number. What I am doing here, x is range number start num, जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ एग्जाम्पल ले लिया जाए, let's see. So if I put here range numbers और यहाँ पे पैरामीटर डाल देते हैं, let's see कितना डालें, 10 डालते हैं और एक डालते हैं 15। लेट्स सी क्या होता है, रेंज नंबर इज नॉट डिफाइन, रेंज ऑफ नंबर क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ कहाँ, वेर इज रेंज नंबर, ये कहाँ से आ गया, रेंज ऑफ नंबर्स, ओके सही है। अभी maximum size exceeded, okay, I got it. console.log, oh here you go, 15, ओके ओनली 15, ओके आई थिंक ये काम कर रहा है। देखो स्टार्ट नम वैसे यहाँ पे गया, इक्वल नहीं था, इसको डिस्कार्ड कर दिया, लेट एक्स ये भी डिस्कार्ड, यहाँ पे आया, इट गोज की लेट्स से रेंज स्टार्ट में इस 10, और ये क्या है, इसको भी पड़ गया क्या, 10 + 1 12, वो इसको हटाते हैं, एक्स तो वो भी 15, ओके, तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ कुछ, 10 से स्टार्ट हुआ तो क्या 10 पे ही रह जाएगा, 15 कैसे प्रिंट हो गया, इट इज व्हेन इफ एन नम इक्वल स्टार्ट नम, आई थिंक इसको होना चाहिए +1, ओके, रेंज में स्टार्ट नम +1
एंड रेंज नंबर स्टार्ट नंबर +1 पे जा रहा है, 10 से स्टार्ट हुआ। ओके, पुश करना, पुश का यूज़ किया, यूज़ द पुश फंक्शन डॉट पुश से क्या यूसेज यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग क्या। यप, स्टार्ट नाउ। वो वो ओके। ऐड क्यों नहीं हो रहा है? उसमें 15 ही ऐड हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे 10 आया, सो दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज एन इज नॉट इक्वल। सो यहाँ पे आएगा लेट एक्स टू रेंज ऑफ नंबर्स स्टार्ट एन एम प्लस वन, दैट वुड बी 10 प्लस वन। 10 चला गया इसमें, यहाँ पे है 10 प्लस वन 11, 11 कॉलिंग 11 भी नहीं, फिर 11 इसमें चला गया, लेकिन ये कुछ ऐड क्यों नहीं कर रहा है? ऐड क्यों नहीं कर रहा है? योर फंक्शन शुड रिटर्न एन एरे। कैन स्टैंड, इसको एरे ही रिटर्न करना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एरे रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है? एनी आइडिया? एरे कुछ मिस कर गया? एवरीथिंग इज फाइन यार, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? यहाँ पे ये डाल दो क्या? एरे क्रिएट करना है क्या? 15 एरे से भी कुछ भी नहीं हुआ। ओ हो, काफ़ी ज़्यादा रिकर्जन का तो वाट लग चुका है, कुछ भी कहो। स्टार्ट नम प्लस वन लूप हो रहा है, स्टार्ट प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन इट वाज एडिंग भी हो रहा है। वेट अ मिनट आई थिंक, या सही पुश सही, आई थिंक यस, ओके इट्स ग्रेट। तो यहाँ पे होना चाहिए, वर्क क्यों नहीं कर रहा है? व्हाट इफ अगर 10 ओके 12 12 क्यों? अच्छा, रिटर्न एंड में 20 पे फर्क पड़ रहा है क्या? अरे यार, इस पे ये प्रिंट क्यों रिटर्न वन क्या करें? यहाँ पे कुछ बदलना पड़ेगा क्या? शिट 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 शिट। अभी भी तो वही हो रहा है। 12 क्यों प्रिंट हो रहा है? इफ एन रेंज ऑफ नंबर स्टार्ट नम प्लस वन, सो इसको कॉल करेगा स्टार्ट नम से, जैसे 10 से स्टार्ट हुआ, 10 11 12 रिटर्न, एंड देन इफ एंड इज इक्वल टू स्टार्ट नम, जिससे कि या फिर जैसे 12 12 हो गया, देन द रिटर्न द एक्स। सो जो भी एक्स जमा किया गया है को कृपया रिटर्न करें। ये दो सही तो है, ओके नहीं सही तो कुछ भी नहीं हुआ।
global variable should not be used to cache the array. A global array should not be used to cache the array. ओके, जो कि यहाँ पे यूज़ तो नहीं हो रखा है. I think I really need to solve some questions on recursion. Okay, let's see the solution here. Let's see. अरे इस पे वीडियो रहता है, वीडियो नहीं रखता है. Time is up. Time is up. Not going to give much time to solving all the while here. I don't know काफ़ी complicated क्यों हो रहा है. I think I need to learn really about the recursion here. That's a very important topic. I don't know why having a confusion here. recursion. अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो चीज़ें होने वाले सी तो क्या है यहाँ पर. ओके, अपन लोग के इफ एंड नम इज लेस देन स्टार्ट नम, ओके, रिटर्न द एरे. एंड नम, एंड नम में लेस कैसे हो सकता है? जैसे 13 आ गया. If a startup num is greater than n num, okay. ओ समझ गया क्यों किया, बिकॉज वी वांट टू इंक्लूड ऑल्सो द 12. ऐसे तो 12 में ना इंक्लूड होगा. ऐसे ये वांट कि 12 13 शुड बी लेस देन नम. क्या है ओके, लेट्स सी. और यहाँ पे रिटर्न एम्प्टी एरे डाल. ओके, बाकी यहाँ पे इफ़ का यूज़ करा गया है. ओके, इफ़ का क्या जरूरत था? क्यों रिकर्जन से नहीं होता क्या काम? एल्स कांस्टेंट नंबर्स. ओके, स्टार्ट नम हियर. क्यों मैंने जो किया उससे नहीं हुआ क्या? एन नम -1 मीन्स अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ 15, तो 15 - 1 14. पुश, हाँ पुश का यूज़ किया गया है बस एन नम यूज़ करने के लिए. मीन्स स्टार्टिंग एन नम से हुई है 14. ओके, ओह आई सी. तो 14 लास्ट में चला जाएगा ना, बिकॉज अगर स्टार्ट नम आता है पुश में तो वो लास्ट में चला जाएगा. तो फिर यहाँ पे 10 ही लास्ट में चला जाएगा. ओके, तो फिर 10 के साथ ही क्यों नहीं दे रहा? गड़बड़ क्यों हो रही है कोड? लेट्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है. सो इसमें लेट्स से 10 आया, यहाँ पे 10 आया और 10 चला गया यहाँ पे. फिर 11 आया गया. ओके, फिर 12 आया. देता हूँ तब भी 15. ओके, फिर 12 आया. फिर 12 आया. 12 फिर 13 14 16 आया. इफ let's say it went to till 16. 16 is greater than the end num, return this one. हमेशा स्टार्ट नम को ही ऐड करते रहो. ओ क्रैप, स्टार्ट नम +1. 2 पैरामीटर्स हो रहा है तो 2 पैरामीटर्स जाएगा ना. डेट्स ऑल, वही तो. ओके ओके ओके, 2 पैरामीटर जाना चाहिए. कंफ्यूजन हो जाएगा कोड को, बड़े क्या कर रहा है अभी. हाँ, यहाँ पे जाएगा इन नम. मिस्टेक. मतलब पैरामीटर जितना है उतना ही रहना चाहिए. 2 से अपनी कैसे हो, बिकॉज यहाँ पे अगर फिर 10 आया, 10 और 15 दोनों आएगा यहाँ पे. फिर यहाँ पे चुनिए कौन की 10 है, 10 ही में से आएगा. 10 इज़ ए स्टार्टिंग. 12 तक जाने के लिए आई थिंक शुड बी यूजिंग 12 + 1, क्योंकि तो 1 है.
वाई इट इज़ नॉट गेटिंग लाइक मे बी हो सकता है। ओके एक और चीज़ ट्राई करते हैं। वेट वेट मिनट 12+1 एन करते हैं अब। अभी भी 15 आ रहा है बिकॉज एन एम किए टू से स्टार्ट नम +1 किया हमने। सो 10 हुआ, 10 स्टार्ट फ्रॉम 10, यहाँ पे 10 गया, देन 10+1 and we have the enum here. So why we are having the enum? हर बार 2 का पैरामीटर जाएगा क्या एवरी टाइम? जैसे पहले था लेट्स से enum ये 10 to 10 और 15, 10 15 गया यहाँ पे। जैसे पहले गया 10 और 15, सो 10 और 15 बन गया, 10 स्टोर भी लेट्स से 15 गया बॉक्सा में। नाउ अभी फिर से फंक्शन कॉल किया गया, अब 10 बन गया 11, 15 का 15 ही रहा। ऐड तो हमेशा 15 ही हो रहा है ना। यहाँ पे तो मैंने 15 ही डाल दिया है। एक एनम डालो तो एनम तो हमेशा 15 ही है। ओके क्या क्या करें कि स्टार्टनम डाल देते हैं ना, उसको प्रिंट कर दो भाई। स्टार्टनम ही प्रिंट कर दो। ये कोड क्यों नहीं सेव हो रहा है? स्टार्टनम में क्या प्रॉब्लम है? स्टार्टनम करो करो। अरे यार इसमें भी नहीं हो रहा है। क्यों स्टार्टनम क्यों नहीं जा रहा है? मुझे उल्टा ही दो। उल्टा भी नहीं हो रहा है क्या ये? एनम इज स्टार्टनम और स्टार्टनम मेन माइनस कौन कैट। क्या सोल्यूशन 3 क्या है? यहाँ पे मैंने 10 डाला, सो यहाँ पे दैट विल बी 14, ऐड द 14 ईयर। फिर से यहाँ गया कॉलिंग, द कॉलिंग फंक्शन हो रहा है। 14 हुआ तो यहाँ पे जाएगा 13। ओके 14 13, so add the 13, then 13, then 12, then okay, then the enum becomes let's say it goes till 14, it goes till 11. 11 goes now when the enum is less than start num. Who's the enum? Okay, that is the case here. Wait a minute, just wait a minute. Okay, I'm back. So let's say start from 10 and 14 minus 1, 15 minus 1 14, फिर से यही जाता है 10, 14 minus 1 13, 10 12, 10 11, 10 10, then 10 9. सो इनम क्या हो गया? इट बिकम्स लेस देन द स्टार्ट नम। सो ये तो फिर अगर 10 8 10 7 10 6 चला जाएगा तो इसको करेंगे व्हेन द एनम इज लेस स्टार्ट नम पहले, देन इट वाज स्टिल लेट्स से 10 10 पे आया लेट्स से, सो ऐड द एनम बिकम्स द 10। ओह आई सी, द एनम ऐड हो जाएगा इसमें। ओके ग्रेट, ओके फाइन हियर। So now when the n becomes less than the start, so why not do the other way around? That's what I'm talking about. Why not do the other way around?
let's say if start from 11, I want to get ulta answer. Let's say ulta answer लेते हैं 11, 11 start from 12, it goes till 13, 14, it becomes equal to 15 when the start num is wait a minute, अरे यार, the start num is greater than end num. इसमें भी वही केस हो रहा है. The start, let's say it becomes 16 here and it's still 15. इस केस में तो ये होना चाहिए वाई, बड़े उल्टा होगा तो देन रिटर्न दिस. क्यों ये प्रिंट नहीं कर रहा है? स्टार्ट नम प्लस 1 इन, इट इज नॉट गिविंग मी द आउटकम दैट आई वांट. ये हमेशा ये प्रिंट ही क्यों कर रहा है? ये वाई इट इज प्रिंटिंग ओनली दिस? वाई oh shit, there is a mistake I see here. Okay, मैंने फंक्शन को कॉलेज नहीं किया. आई वुड नो. ओ ना, अब देखो ये सही हो गया. 15, 14, 13 ये उल्टा में है. ओके, मतलब मेरा फंक्शन सही है. लेट्स से ओके, मिसिंग था एक छोटा सा गलती. लाइव सेशन में ही होता है. इक्वल टू ओके 14, 13. यप, जैसे ही बन जाता. लेट्स से व्हेन स्टार्ट नम इज ग्रेटर देन एंड नम, गेट मी दिस वन. ओ कूल. यस इफ इट डजंट सेटिस्फाई. ओह, इसको उल्टा चाहिए. ओके उल्टा चाहिए. So what we can do here, can we put here unshift here, unshift. Yeah, hell yeah, come on. Yeah, woo, this is my code. Okay, this is the solution here. This solution is totally different than we have solution दिया हुआ. लेकिन look at solution this. Okay, it's my one unique one. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं. एक ये भी सोल्यूशन हो सकता है, एक ये भी सोल्यूशन. एंड व्हाई नॉट ऐड माइन? कैन आई ऐड माइन? क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन ऐड दिस. ओके. ग्रेट. लेट मी ऐड माई सोल्यूशन ओवर देयर. ओके, एक और चीज़ बताना था. सबसे अच्छा सोल्यूशन तो मुझे वो लास्ट वाला लगा. कोड के मदद से हमेशा रहना चाहिए कि कैसे आसान से आसान क्रिएट किया जाए. कि आई कुड नॉट शेयर देयर विद दैट. ओके, विल डू इट लेटर. मुझे इसका सोल्यूशन सबसे आसान लगा. लाइक जैसे उस वहाँ पे क्रिएट किया गया एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके. इट वाज रियली ग्रेट. मतलब दैट्स द थिंग मैन, कि तुमने सब कुछ सीख लिया. यू लर्न ऑल द सिंटैक्स कोड्स. अब ना उसका यूज़ करके कैसे एक सबसे कम लाइन में उसको लिखना है, कैसे कम लाइन में करना है. और यू कैन से कम स्टोरेज में भी. यहाँ पे देखो, ये 2 ही लाइन में पूरा आई मीन सब कुछ कंप्लीट हो गया. इन जस्ट 2 lines everything came into one. या आई थिंक ये थोड़ा मेरे जैसा है. हाँ, इतने सारे लोग हैं यार, सबका अपना दिमाग चलता है. और कम सो आई थिंक चलो एक सोल्यूशन तो है जो सेम है. ये सोल्यूशन मुझे काफ़ी फास्ट लगा है. रिटर्न इन नम इज लाइक रेंज ऑफ नंबर स्टार्ट नम इन नम -1. वाह, ये सही है. दिस इज ग्रेट. दिस इज रियली ग्रेट. व्हाट इज द कॉनकेट हेयर? आई डोंट अंडरस्टैंड. कॉनकेट का यूज़ क्या होता है? ओके, मुझे लगता है एक सिंटेक्स देखना पड़ेगा. व्हाट इज द कॉनकेट हेयर? व्हाट कॉनकेट डज? ये पढ़ा है क्या इसमें? कॉनकेट डॉट इन नम रेंज ऑफ नंबर्स के बाद n-1 डॉट कॉनकेट नम. ये बोलता है कि इफ दिस इज ट्रू, दिस इज द कंडीशन, then return empty array, or else, I mean if this is true, return empty array, or else range of numbers
start num end num minus 1 dot concat is like adding. Okay, I see. Okay, let's use the chat GPT. I hope you guys know about the chat GPT. This is a what do you say, artificial intelligence designed by OpenAI and Sam Altman and Elon Musk project. Some language model, machine learning language model. I see here it's already expired over there. Every time, what the fuck is that? I hope my password is saved. Let's just see. This is the use of the thing here. Traffic lights, traffic lights. Okay, where is the okay, I am just logging into the chat open.y, asking, not using the Google this time, and just taking conversation with the teacher available in chat GPT. Let's go. Here we go, here we go. So let's see, let's ask, hey, what is concat? He is this chat GPT, the ML language model has been trained on the human conversation. It's like had been feed on the data. It does not browse. See here, concat is a short for concatenate, which means to combine two or more string files into a single. And for example, you might use hello.ol in single or like hello.ol. Let's see the code. Whoa man, क्या बात है यहाँ पे कोड की मदद से। आई होप ये सारे कोड का सोल्यूशन जानता है डेफिनेटली। ले बताना है कि कॉनकैट इन जावा स्क्रिप्ट। फ्यूचर में इसको हर एक लैंग्वेज में आना चाहिए। लाइक अभी तो ये ओनली ट्रांसलेट्स ओनली टॉक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट फ्यूचर में चैट जीपीटी विल कन्वर्ट डेफिनेटली इन हर एक लैंग्वेज में, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर यूजफुल होगा। और ये काफ़ी कुछ करता है इसका। यू कैन टॉक एनीथिंग एज अ फ्रेंड, एज अ teacher, as your whoever it is. It just sounds like a human chat, human talking. Yeah, ये रहा यहाँ पे concat.string. Let's see. You can use the concat to combine two more string into a single string. This is called a string class. So you can call anything. Example of concat, like यहाँ पे दो string दिया हुआ है, hello world. concat string का नाम है string1 dot concat comma string2. तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्या कोई बता सकता है इसको यहाँ पर? कैन यू प्लीज और कैन पास एनी concat to combine them all into one string. यहाँ पे इसको सीधा ये तो लिख सकते हैं कि string2. Okay, great. Let's move ahead. Cracked it up to 11. कितना बचा हुआ है अभी? बेसिक जावास्क्रिप्ट में देखते हैं। अरे इतना स्लो क्यों है? Any JavaScript. लेकिन इसमें क्या है कि ये जो ट्रेंड हुआ है वो अपडेटेड डेटा के साथ नहीं, मतलब इससे मैंने इसे पूछा था, इसने कहा था कि 2021 तक के
तक डेटा पे अपडेट मुझे ट्रेंड किया गया। मुझे नहीं पता 2022 में जो भी हुआ है मुझे नहीं पता होगा, जो भी नया नया डेटा आया होगा, नया इन्फॉर्मेशन आया, नया कोई आर्टिकल आया, नया नया कुछ भी इवेंट हुए, मुझे वो 2022 में कुछ नहीं पता, बिकॉज मुझे इस पे ट्रेंड नहीं किया गया। जब तब मैंने इसे पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज़ फिर से वो ऐड कर सकते हैं क्या तुम्हारे अंदर वो डेटा, फिर बोला कि नहीं, I was trained on a fixed data. If I have to train the same, if no one can feed me again the new data, it is not possible. Like it says that if I was trained again, like if I had been trained, I could not be trained again. So that's not the way it works. If just once if I had trained, that's the way. That I mean, that only once I can be trained. So if I want to have the update data on any language model, you have to create another language model. So I think I mean I don't I mean they should definitely change this thing. Like if language model, if whatever the language model in future, you can update with any data the right away. Like you connect to the internet. Yeah, many online. Okay, let's use this one. Let me ask one question. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैन यू बी अपडेटेड with latest data? He doesn't even know the date, I think. if अगर तुमने if you ask the chat gpt what is the date today, like I don't know. Definitely I will ask by developers. See the answer of the chat gpt. ऐसा देखना क्या जवाब देता है, देखो ध्यान से. I am a large language model trained by OpenAI, so I do not have the ability to update myself with the latest data from developers. So I am a virtual assistant that is designed to assist with answering questions. I do not have the ability to access new information or update my knowledge. See, my knowledge is based on the data that was used to train me. It's like uh, देयर इज सिलेंडर, और उसमें मैंने पूरा अच्छे से पैक कर दिया, पूरा कुछ भर दिया, जितना भी गैस भरना था, जो सामान भरना था भर दिया और अच्छे से सील्ड कर दिया. अब मैं अंदर से फिर बाहर से फीड नहीं कर सकता क्योंकि एक पैक बन चुका है, एक पैकेट बन चुका है. अब नया पैकेट लाना पड़ेगा. एक बिस्किट का पैकेट तैयार हो गया है, उसमें मैंने 10 बिस्किट डाल दिए हैं. यू कैन नॉट ऐड वन मोर. देर इज सो पैकेट हैज बीन क्रिएटेड, पैकेट बिस्किट हैज बीन क्रिएटेड, सो यू कैन नॉट ऐड एनी मोर. If you want another one, it's like, hey, can you give me another one biscuit? It says, I do not have, I just had the fixed amount of data. If you want, why don't you buy another one? It's like, if you want the latest data, why don't you go and buy, और क्या बोलेगा, update, buy a, you know, or build another language model. Yeah. So you just ask like, what's the date today? What's the date today? See, come on, I'm sorry, but I am a large language model, so I do not have access to the current date. As a virtual assistant, I am not able to access information about the current time, so my responses are based on my training data, which is a fixed cutoff date. Fixed cutoff date इसका है 2021 तक, and मैंने इसे पूछ लिया था वैसे. If you ask him, what is your let's see, what is your fixed cutoff date? Let's say क्या कहता है ये. What is your fixed cutoff as long as based on the data that was used to train? वाह, ये बता ही नहीं रहा. लेकिन मैंने एक इसे ऐसा एक जब काफ़ी का चैटिंग करा था, मुझे इसमें पता नहीं कैसे, बट ही सेड दैट इट वाज अप टू मे समथिंग. ओके, let me see what I asked the question like. Let me think. I asked him that okay, if this is not a fixed update date, can anyone train you? No. Can anyone training data specific? Yeah, I know the question. Okay, who is Prime Minister of India? अभी देखना ये कैसा था. Let's see. जैसे, but
Today date is today year is 2000, let's say 24, not 2022. Then let's hear his say. Okay, let's see. अरे यार, okay, it is not saying 15 दिसंबर। सी 15 दिसंबर कैसे होगा कि 15 दिसंबर तक ये जानता है। कैसे ना स्कीम born in January 2022, समथिंग रिलेटेड टू द डेट। लेट्स सी वो ये बोलता क्या है। इसके पास नहीं, वहाँ लग रहा था। Till what year I can ask? I can ask you about event सी क्या कहता है। ठीक है, कौन डेटा बोल। अरे यार ईयर ही नहीं बोल रहा। नहीं बता पा रहे, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। इसने कहा तो ठीक है, इससे पूछते हैं हु। ओके ओके, क्या बोलते हैं। ओके अरे यार, यू सेड सी, आप बोल रहा है दैट फॉल्स आउटसाइड ऑफ माई ट्रेनिंग डेटा। व्हाट हैपेंड इन 2020। लेट्स सी ये क्या बोलता है। ट्रेनिंग डेटा एक ईयर तक होता है कि इस ईयर का डेटा है इसके पास। लेट्स सी कि अभी भी वही जवाब दे रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि अरे यार, लेकिन ये कैसे कह सकता है। ओके ओके, ये भी अभी वही जवाब दे रहा है। ओके बट यू सेड you was trained till May 2021. Okay, was trained on data. Okay, let's see. Yeah. Finally, let's say if you just change, बोलते हैं इसको, आई थिंक ये मेरा चैट रिमेम्बर करता है। तो इससे लेट्स से अगर मैं 22 लिखता हूँ, क्या ये यस बोलेगा? डोंट से यस। फिर से क्या बोल या yep, see, so 2021 is the fixed year. May 2021,
डोंट लाई, ये ठीक नहीं। आई मीन व्हाट इज दिस? आई मीन it should it should tell what year data this has been trained on. Okay, that's the end, I think. Yeah, so 100% complete. बेसिक जावास्क्रिप्ट बेसिक कंप्लीट हुआ यहाँ तक, और आई थिंक आई जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ रिवीजन हियर. क्या यहाँ पे नाइसली डन, या व्हाई डोंट यू आस्क मी लेटर? ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट होता है ES6 बढ़ने से पहले देखेंगे क्या क्या होता है. लेट मी, पहले मुझे एक चीज़ देखना है. बेस्ट प्लेस टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिस्कवर फ्रंट-एंड कोड. वाओ, oh great. Okay. Constant str equals mush. Let str1 equals Loki. And now let me use let x equals okay, why not console dot log राइट. यहाँ पे तो ये और लिखते हैं s ओके. यहाँ पे डालते हैं क्या 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 चलो इसको करते हैं प्रिंट. इसको रन कैसे करना है? अरे इसको रन, अरे कॉन्सोल यहाँ है, या देखो यहाँ पे आ गया ना, अमूस लोकी. सी, दिस इज द अमूस लोकी. तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग ऐड हो गया. अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ यहाँ पे, जस्ट ए स्पेस, देखो क्या आता है, या स्पेस क्रिएट हो गया. या डेफिनेटली ये स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है. कौन कैट मैं ले लेता हूँ. यप, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने वाला यूज कॉनकैटन. सो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, वंस यू फंडामेंटल डाउन टू अप्लाई द नॉलेज. ये चीज़ हो गया इसमें फंडामेंटल, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, एरेज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए. लूप्स में रिकर्सिव भी थोड़ा वर्क करना है. फंक्शन तो हो ही गया.
ना फंडामेंटल्स हो गया। अब विल यू अप्लाई दैट नॉलेज बाय क्रिएटिंग एल्गोरिदम क्रिएट करना है, मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स, फैक्टराइज नंबर्स एंड इवन कैलकुलेट द ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो एल्गोरिदम क्रिएट करना, एल्गोरिदम टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स, ठीक है ठीक है। एंड दो इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल भी सीखना है, OPP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। हे 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 व्हाट इज एल्गोरिदम? स्क्रिप्ट, लेट्स सी क्या बोलता है ये। जस्ट एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स और प्रोसीजर। समझ में यार, एल्गोरिथम इज अ स्टेप्स और प्रोसीजर है, कोड में ही होगा ना, डेटा प्रॉब्लम कम, ठीक है। प्रोग्रामिंग ऑपरेशन दे कैन बी राइटेड बाय जावास्क्रिप्ट, या डेफिनेटली इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। या और यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया एल्गोरिथम का। ओके, दिस इज अ सिंपल एल्गोरिथम, वाओ दैट्स ग्रेट। या कॉल द सम फंक्शन, इसका मतलब मैंने एल्गोरिथम का यूज़ करा है और यूज़ उसके बारे में उसका यूज़ करते आ रहे, पढ़ते आ रहे। ओके, डेफिनेटली कूल। Recursion is also one kind of algorithm though. Comment on current सोच रहा है अभी, डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, क्या लिखूँ क्या लिखूँ। तो या डेफिनेटली अभी सीखना ये है, फंडामेंटल सीख लिए, उसका रिवीजन करेंगे और कुछ कोडिंग से रिलेटेड और सॉल्विंग। उसके बाद अपना एल्गोरिथम से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है जानेंगे, क्या होता है मुझे नहीं बचा लास्ट में ठीक है। तो बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया। आते हैं अब ES6 पे। ओके, ES6 यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, इधर इधर टॉपिक टॉपिक, कमान कमान। सो लूप्स में ऑब्जेक्ट डन, लूप्स का सारा डन, लूप्स भी हो गया सब कुछ। अभी बारी आती है ES6 की। यो ES6, ES6। ओके, ये क्या ES6 और ये सारे सी और अरे अरे अरे, इसको हटाते हैं और डालते हैं यहाँ पर, पेस्ट करते हैं, पूरा आ जाएगा। पूरे यहाँ पे आ गया सब कुछ, ग्रेट। नॉट पास, अच्छा कुछ कुछ ये यहाँ पे आ जाता है। क्या है नॉट पास नॉट पार्टी, क्या आ गया है नॉट पास नॉट पास्ट? ये कौन सा फंक्शन है जिसका खुद नॉट पास मतलब, अच्छा वो डॉट आया है क्या? फिर डॉट भी इसका कॉपी हो जाता है, इसको हटाते हैं और इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बनता है। इसलिए यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है कि ब्रेन में बनता है कि अरे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें है। सो क्लैरिटी बनती है, क्लैरिटी, इसलिए इसको आई थॉट कि क्यों ना करा जाए इससे, और जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। हटाया इसको और यहाँ पे डालते हैं, नॉट पास्ट भी गया, ये इसको हटाया जाए, हो गया नॉट पास्ट नॉट पास्ट। अरे यार दिन निकल जाएंगे ऐसे तो।
ये सारे हैं, ठीक है, टॉपिक्स। डेफिनेटली ये 6 हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक शुड आई पुट द डेट ओवर हियर। Completed on 15/12/2022. स्टार्टिंग डेट कब का है? ओके, जब स्टार्ट होगा तब देखूंगा, ठीक है। सो या ये टॉपिक क्रिएट हो गया है। थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये 6 का कुछ देख लेते हैं। ये 6 भी क्या है, ये 6 के बारे में सर ई सी में स्क्रिप्ट और ये ई सी एम ए इज ए स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन। वेट अ मिनट, ओके ट्रू, बिकॉज ऑल मेजर ब्राउजर्स फॉलो दिस स्पेसिफिकेशन। क्या होता है स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन? द टर्म ई एस एम ए स्क्रिप्ट इट्स लाइक ए जावा। अच्छा, जावा यहाँ पे आ गया था, जावा इज रिलेटेड टू जावा प्रोग्रामिंग। सो ई सी एम ए, क्या बात है, ई सी एम ए स्क्रिप्ट आर इंटरचेंजेबल। ओके, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट यू हैव लर्नड अप टू दिस पॉइंट वाज इन ई एस 5, okay, which was finalized 2009, something like HTML5 और CSS की तरह जाता है। while you can still write program in ES5, JavaScript constantly evolving and new features are released every year. wow, every year JavaScript का नया फीचर रिलीज होता है और that is kind of man अपडेट होना पड़ेगा। that is a good way for developers to get to always updated, add many powerful new features to the language। देखना पड़ेगा ये क्या यूज़ है इसका, समझ आना चाहिए कि ये फीचर्स है क्यों है, क्या इसका है, क्या ऐसा डाल दिया है, फील होना चाहिए। और ये चाहिए होता है ना, जैसे कि लेट्स से कुछ वर्क कर रहे हैं, अचानक हाथ में ये दे दिया, अरे ये आ गया, वाह इसका और यूज़ होगा, अरे ये आ गया इसका और यूज़, ये कर सकते हैं और आसान हो गया। फील होना चाहिए, नहीं तो जो कुछ आइडिया नहीं, ये सीख दे दो, जावास्क्रिप्ट दे दो, कुछ मतलब ही नहीं क्या हो रहा है, क्यों दे दिया। सो पता रहना चाहिए। So you learn about arrows function, destructuring classes, promises and modules. Okay, great। ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जिनका चलन इसमें सिखाया जाएगा। ओके, वाह ये क्या है? ओके, तो ये सारे टॉपिक है, एरो फंक्शन, डिस्ट्रक्चरिंग क्लासेस, प्रोमिसेस एंड मॉड्यूल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं सीखने की। स्टैंडर्डाइज वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके, बिकॉज स्टैंडर्डाइज वर्जन मतलब क्या होता है? फॉलो दिस, इस लाइक फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स। 2009 में इसको ऐड किया गया था। एक मिनट, वेट मिनट, ओके, ई एस 5 2009 में, और देन ई एस 6 को भी रिलीज़ कर दिया गया 2015 में। ओके ओके ओके, न्यू फीचर्स, हाँ। अच्छा, एरोस फंक्शन तो सीखेंगे, ये सब बड़े न्यू फीचर्स है जितने भी, इंक्लूडिंग एरोस फंक्शन। ओके ग्रेट, लेट्स से व्हाट आवर एआई सेज अबाउट दिस वन। क्या नॉलेज है इसके पास? ई एस को समझा, गया दिमाग में कुछ, ई एस क्या होता है? ई सी एम ए, ओके, ई सी एम ए, वाई नॉट, राइट, ई
वाह, ये क्या हो गया, तो पूरा वो डाल दिया। CMA स्क्रिप्ट। अरे कम ऑन स्टॉप, अरे स्टॉप का एक बटन होना चाहिए। आई थिंक चैट जीपीटी के पास स्टॉप का बटन होना चाहिए कि अरे नो नो नो, बस इतना ही हो गया, मुझे नहीं जानना है। लेट्स सी क्या है इसमें, स्क्रिप्ट के बारे में बताता है। आई थिंक खुद आया देर हो गया तो। Okay, 1 hour 20 minutes, that's kind of late. JavaScript language that is used by web browsers and other applications to provide dynamic, interactive content. Oh, which is the most widely used script language of web. European Computer Manufacturing. That is the ECMA, European Computer Manufacturing Association has tried. With the goal of so yeah. आम्ही कधी दुसरं बात दुसरं आने जाने आने जाने ये मैथी पैसा आती है 15 का डेट लिखा दे वही के कादो कादो कहिले हनी दीदी दा आ देख ना गिरा ले ला ले दूसरा अभी ला हम अब गलती ने पिछला गलती किए एक्सेप्ट नहीं मिला टोटल हो गया पता है किस में 800 हो रहा है 480 फॉर्म का आधार कार्ड 250 और पैन कार्ड 106 नहीं मांगा है, चुपचाप बैठा रहता है। हम भूल गए थे खुद से ध्यान से कर गए थे कल मांग लिए पापा किसी ने दे चुके थे फालतू हम मांग नहीं जाते ऐसा कुछ नहीं, चुपचाप रह, तू अपना काम करो। के सब पहले कादो दे गिरा ले और अब हांगा चुप। Since updated to the final server version today, is basically widely used by web browser. जाने को छोड़ा कर दे बाजरा ही कादा क्यों ना? अरे अजीब को पिया। Many for the React development. That is used by web browser and other applications to provide dynamic and interactive content. It is a standardized version of JavaScript, which is the most European Computer Manufacturing Association is a standard version of JavaScript with the goal of नाम को भी चाहिए वो सब नहीं होता है across different platforms and applications. हम ऐसा ही ढीला लगे बात है हमेशा वे को दिन में दिए 200 500 दे देंगे नहीं 500 दाम ना उस दिन जो ली थी एक बार देवे नहीं ला इसका मैं So yeah, I'm back again. So but definitely ये एक यहाँ पर अच्छा दिया हुआ है कि यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। 1997 में पहली बार आया था। इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड, आई डोंट नो क्या होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, देखना पड़ेगा। दैट इज यूज्ड बाय अदर वेब ब्राउजर्स एंड अदर एप्लीकेशन टू प्रोवाइड डायनेमिक और इंटरेक्टिव कंटेंट। देखना पड़ेगा ये क्या है, ये डायनेमिक और इंटरेक्टिव कंटेंट पता चलेगा। डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइजेस। Today is used by web browser and other application to provide like अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि provide interactive dynamic content। वो होता है क्या, animation, games, other interactive features। Okay, that is the feature that is used।
क्या किसान में क्या पाते 500 किसान दिया था पेट्रोल लाइन में 300 का लिए लाग ना क्या है 300 का नहीं देना से 300 का नहीं क्या बोल रही है? 200 दे तू पागल है क्या बे अरे 500 दिए थे ना इसको, पापा दिए थे आज। ओ तो रात दे देते हैं खड़ा है ले 500 एक खाली दे दो मम्मी को 500 नोट ले सीधे लाख से मम्मी को चेंज दे दो 500 नोट क्या लेने देना ये सबसे? तू बैंक में जाएगा कितना खुदा लगता हो जाएगा तो क्या लेने देना? चल भी ना गाड़ी सीखे हां ऐसे करे जो जो फ्रेश हो जाके बाकी 3 बजे चाहिए जल्दी आई जो कपड़ा क्या करे, कपड़ा खींच दे तो फिर फ्रेश हो जाओ जो। हाँ जो जो बैठल ना रहे। सो या इसमें इज यूज फॉर आई थिंक क्रिएटिंग गेम। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हुआ, मतलब इंटरेक्टिव कंटेंट क्रिएट करने पे, जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन गेम हो गया। दूसरा फीचर्स यहाँ पे एक और बोला सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग डेटा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। और बहुत सारे लाइब्रेरी फ्रेमवर्क भी दैट बेस्ड है, दैट इज रिएक्ट एंड एंगुलर आर आल्सो बेस्ड ऑन, या दैट इज an important part of modern web development. Great thing here, we will use scripting language. So that's all for today's session. I think we'll start that. Here goes the end of the session. We'll meet tomorrow or maybe the next live session. Okay, goodbye. That's all for today's. All the best. फिर से इसी सेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे in the next coming time.